and now permeability of the stratified. This is the most important, this is the last topic which comes under हमारे permeability chapter में आएगी कि permeability, what is stratified. देखिए stratified soil क्या होता है? Soil, when the soil is made of different layer, means the thickness, for example मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम stratified soil किसे कहते हैं? When the soil is made up of different layer, means if we have the soil, we have layers, and the thickness of the thickness of the layer will be different. Thickness of layer will be different. Now we have two scenarios for stratified soil deposits always, because they will have, each layer will have different permeability, means the permeability for the first layer will be K1, or if the permeability of second layer is K2. So stratified soil क्या होते हैं? Stratified soil, देखिए दो टाइप के सॉइल होते हैं. एक होमोजीनियस, व्हेन द सॉइल इज मेड ऑफ, व्हेन द थिकनेस ऑफ सॉइल इज सेम फॉर ईच लेयर, ओके, दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस सॉइल. एंड स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड सॉइल इज बेसिकली मेड ऑफ द डिफरेंट लेयर whose thickness and height will vary, and they will have a different coefficient of permeability. So suppose if we have a soil deposit which is made of a stratified soil deposit, so when the flow is taking, the flow will take either parallel to the direction of flow is take place parallel to the stratification, or to the normal to the stratification. So we will have a permeability in two directions. Either flow will take parallel to the bed of stratification, or either flow will take normal to the bed of stratification. Okay, means कि जो layer soil के, जो हमारी stratified soil deposit है, या तो हमारा पानी पैरेलल से फ्लो करेगा, और either it flowing to the perpendicular to the layer of stratification. So when the flow is taking parallel to the bed of stratification, then and if we want to find the horizontal coefficient of permeability, then we can say K1 Z1 but K2 Z2 K3 upon Z1. If we have three soil layer deposit and the coefficient of permeability of the first layer is K1 and the coefficient of second layer K2 and the thickness vary, then the horizontal coefficient of permeability is given by the K1 Z1 K2 Z2 प्लस K3 Z. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में कोई भी इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा परमेबिलिटी से, दैट फ्लो इज टेकिंग पैरेलल टू द बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और नॉर्मल टू द, सो यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. सो फॉर द इफ द फ्लो इज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, देन हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन बाय K1 Z1 plus K2 Z2 plus K3 Z3 upon Z1 plus Z2 plus Z3. Okay, and always remember the head loss if the flow is taking place to the parallel to the bed of stratification, then head loss will be to the equal, means the total head loss will H1 H2 H2 will remain constant. And when the flow is taking normal to the bed of stratification, then the head loss will be sum of, when the flow is taking place perpendicular to the bedding plane, then the total length of flow remains same, but the head loss will be equal to sum of H1 plus H2 plus H3, because in parallel to the bedding of stratification the head loss will remain same. दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज हमारे पैरेलल फ्लो कर रही है, then जो हमारा हेड लॉस है that will be equal, because the flow is taking parallel, means the head loss जो हमारे ऊपर लेवल से होगा वो बॉटम लेवल पे भी रहेगा और उसके नीचे भी रहेगा, but the discharge through each layer will be different. means कि अगर when the flow is taking, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये कैसे इसको आप वो कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, कि अगर when the flow is taking parallel to bedding plane, when the flow is taking parallel to the bedding plane, then total head loss will remain same, means कि H is equal to H1 is equal to H2 is equal to H3, and total discharge will be different, that is equal to sum of Q1 plus Q2 plus Q3. But in case of flow, if flow is taking perpendicular to the bedding plane, then head loss will be equal, total head loss will be equal to head loss to first layer plus head loss to second layer plus head loss to three layer, and total discharge will be equal to Q is equal to Q1 is equal to Q, it will remain same when the flow is taken. For example, this is our stratified soil deposit, if it is taking perpendicular to the bedding plane, or this is our soil sample, and if flow is taking parallel to the bedding plane. So in flow parallel to the bedding plane,
then the total head loss will remain same, and total discharge equal to Q1 plus Q2 plus Q3 if the soil is consisting of 3-layer deposit, stratified soil, and the flow is taking perpendicular to the bedding plane of a stratified soil deposit, then the total head loss will be equal to sum of head loss to each layer deposit, but the total discharge will remain same. So for parallel to the bedding plane, we have K is equal to K1 Z1 plus K2 Z2 plus K3 Z3 upon sum of Z1 plus Z2 plus Z3. Okay, when the flow is taking perpendicular normal to the bedding plane, our formula is given, coefficient of permeability is given by Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 upon K1 plus Z2 upon K2 plus Z3 upon K3. That means when the flow is taken parallel to the bedding plane, then we will find the horizontal coefficient of permeability, and if the flow is taking place, normal to the bedding plane, then we will find vertical coefficient of permeability, which is given by Z1 plus Z2 plus Z3 upon Z1 plus K1 plus Z2 upon K2 plus Z3 upon K3. So basically the horizontal coefficient of permeability is given by K1 plus Z1, and vertical coefficient of permeability given by this formula. दोस्तों, this is a very important formulas, because आपको हर क्वेश्चन में, हर पेपर में, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, that whether the flow is taking parallel or whether it is perpendicular. And the most important thing, and if you have given two value coefficient permeability, the first is तो horizontal coefficient permeability आपको वैल्यू दी गई है और vertical की भी दी गई है, and you have to find the average coefficient of permeability, that is given by average coefficient of permeability is given by horizontal coefficient of permeability into वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इसको हम 3 स्टार मार्क करेंगे. यू विल ऑलवेज गेट अ वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस आल्सो कि एवरेज, यू हैव टू फाइंड द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड द वर्टिकल. सो यू कैन फाइंड दिस फॉर्मूला, एंड आपको क्वेश्चन, इसको आपको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं. ऑलवेज रिमेंबर दैट when the flow is taking parallel to the bedding plane, that means the total head loss will remain, because flow is taking parallel, the head will remain same, but the total discharge will equal to, because the discharge will be different to different layer. So the total discharge is equal to sum of each layer discharge to each layer. When the flow is taking perpendicular to the bedding plane, then the total discharge head loss will different, because the head loss will be different to different layer. That means the total head loss is equal to H1 plus H2 plus H3, or if there is given 7 layer, any kind of layer, you can just sum up. Or but the total discharge when the flow is taking to the perpendicular to the bedding plane will remain constant. So दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है permeability chapter, which is a very important chapter, ये हमारा end होता है. और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे 20 मार्क्स या जितने नंबर क्वेश्चन, ये आपको 10 to 15 क्वेश्चन आपको परमेबिलिटी से मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज परमेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड ये इसमें हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले, सो यू हैव टू मीन्स प्रिपेयर वेल फॉर परमेबिलिटी. एंड दोस्तों, मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेहिचक होकर पूछ सकते हैं. हमारे आपके मार्कप्लस एकेडमी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नोट के साथ साथ आपको पूरे टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा आपको एमसीक्यू को, जिससे कि आपको एक मोर और क्लैरिटी मिले. नेक्स्ट चैप्टर में हम दोस्तों हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उसमें लेक्चर में करेंगे, हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिसके थ्रू हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमसे क्या पूछे एंड व्हाट फॉर्मूला वी कैन यूटिलाइज इन द सॉइल मैकेनिक्स. तो बेसिकली देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक आपका सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग, बिकॉज एवरी चीज, हर चीज जो भी हम करते हैं, वी कैन सी द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन द सिविल इंजीनियरिंग. तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कि हमें ये नहीं पता, सपोज दोस्तों अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी चीज पे अपना वेट डालते हैं, तो जब तक हमें उस बेस का नहीं पता कि वो बेस हमारा कितना लोड ले सकता है या कितना प्रेशर झेल सकता है, मीन्स आप क्या पानी में खड़े हो सकते नहीं खड़े, क्योंकि क्यों आपको नहीं पता कि वो आपका वेट ले सकता है कि नहीं ले सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेस, एंड ईच बेस इन रियल लाइफ कंसिस्ट ऑफ सॉइल. So it is most important to understand the soil and permeability. जो आज मैंने आपको बताया, permeability is the main property of the soil.
दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जो कि हमें मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा यूपीपीएससी एआई का एक जो हमारा मैराथन चल रही है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको नेक्स्ट लेवल तक डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर सक्सेस दिलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे दोस्तों।